To remain updated with the latest business news, click on the bell icon. A very warm welcome to everyone, and it gives me great pleasure to once again thank Ravi Shankar Prasad, someone who is not just a lawyer, and you would have seen him in his earlier avatar, but I don't know how many know that he was amongst those ministers when the first convergence bill, and it never happened, came up in the first NDA government. In his most recent outing, he was the law minister, he was the telecom and IT minister, substantial and very important portfolios. And today, on blockchain and government, the possibilities at the Business Today Crypto Conclave. And as the messaging of this conclave says, simplify the complex. And before we walked in, Raviji was asking, what is that that you want to ask? And I said, I will start with that 2006 movie, Khosla Ka Ghosla. I don't know how many of you have seen Khosla Ka Ghosla here. Okay, I see one hand. I'll try and come to you later on, sir. Two, the former CA, 3, 4, 5, 6, 7. Wonderful. So we have people who have seen Khosla Ka Ghosla, another one there, so that makes a cricket team at least. And one of the key things there was this old man, and he's played a stellar role in another movie, by the way, Kashmir Files, running around to protect his property. And many of us here would have seen how land records can get fixed, can get changed, can get completely fabricated. And there's a word called mutation, and in different states we have different terms, but khasra khatoni is something that many of you would know. And blockchain is something that the state of Telangana is looking at to leverage as far as land registry and titles are concerned. There are immense possibilities. And Raviji, I'll start with you. My first question is, if you could please take this. Why is it that in 2022, a forward-looking government, of which you have been part not just once but twice, and a government which had thought of a convergence bill way before anyone else in the world, perhaps one or two other economies had thought of it, has been unable to deliver the potential of blockchain when it comes to dealing with things like Khosla Ka Ghosla? First of all, I must clarify, thank you for inviting me, to you and to Rahul Kaval. Friends, we are all for blockchain. As an IT minister of the country, I took initiative to establish the first center of excellence for blockchain in Bangalore in 2020 itself. It's doing quite well. We came with after a stakeholder consultation, we have set up a national whole ecosystem for blockchain with the skilling, with research. Therefore, blockchain is most welcome. And kindly give me just 1 minute to give the larger narrative as to why blockchain is a part of the process of evolution of technology. Technology is empowering. Technology facilitates. Technology in many ways educates. Getting a little nostalgic in the year 2014 when our Prime Minister Narendra Modi was campaigning, Rahul, in the Ramila ground, he coined, if I am elected as the Prime Minister, I'll try to create an India where IT plus IT is equal to IT, which means India's talent plus IT, information technology, is equal to IT India tomorrow. And I never expected that he will give me the responsibility to handle all this for close to 7 years. See where we are. Aadhaar, UPI payment, this whole connectivity through villages, okay? Fintech movement in India, startup movement in India, digital India. And the way delivery was assured during pandemic. And mind you, it is also a political boon that those who get direct benefit transfer also become your vote because they see a new changing model in the country. All this has happened because of technology. And blockchain, I see as a part of that larger narrative. Since you spoke about Prime Minister Narendra Modi's vision, I have the opportunity to talk about one of his other slogans, which is minimum government, maximum governance.
And since you spoke about India tomorrow at this India Today group event, I want to ask you, why is it that your own initiative that you started when you were in government doesn't seem to be percolating into concrete, credible steps as far as a policy architecture is concerned for government? Let's leave aside the world of private crypto assets, NFTs. We are not getting into that. There are other sessions, by the way. I'm going to focus only on the government aspect. Why is it that a country with 1.4 billion people and 2 billion problems is not leveraging a blockchain when smaller countries, and I have a list of 25 countries who have different use cases right now being developed, prototypes and full-scale projects of blockchain and government? मैं आपके सवाल का थोड़ा हिंदी में जवाब दूं अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल रविशंकर जी। एक बटन दबा के आप 10 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए अकाउंट में डाल देते हैं। ये टेक्नोलॉजी नहीं है क्या? बिल्कुल है ना। अभी आपने कोरोना में इतने लोगों को पैसे पहुंचाया, सिर्फ एक बटन दबाया, पैसे पहुंचे। ये बेनिफिट है कि नहीं है? तो बटन बंद क्यों करना चाहती थी सरकार? बैन क्यों करना चाहती थी? टेक्नोलॉजी के एंकर का ये भी काम है कि जवाब सुनिए। तो पहली बात है, व्हेन आई सेड दैट हाउ नरेंद्र मोदीज विजन ऑफ रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म इज फाइंडिंग great resonance on the ground. You remember there were people who today, there are, to the best of my knowledge, 440 scheme of government of India and state government which are on direct benefit transfer. That's good. They realize the potential and people are happy. It has removed middlemen, etc., etc. तो सर डीबीटी को भी ब्लॉकचेन पे ले आते हैं, दिक्कत क्या है? नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत चीजें ब्लॉकचेन पे आई है ना। आज एजुकेशनल सर्टिफिकेट ब्लॉकचेन पे है। आपने लैंड रिकॉर्ड्स की बात किया, वो ब्लॉकचेन पर है। तेलंगाना है। एक मिनट, वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं, तो एक मिनट में आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कर्नाटका में बहुत सारा स्कीम है, बट रिमेंबर वन थिंग, वन कमेंट अबाउट ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो आई लाइक द बेस्ट, कि दे आर इन द सेम स्टेट एज इंटरनेट इन द अर्ली 90s. But sir, then why did the government of India willy-nilly come into a situation? Headlines आई, हमने नहीं की, वो बिल प्रेजेंट हुई थी कि बैन कर रहे हैं. That put us on the wrong side of technology history. देखिए, मेरा खाली कहना यह है कि आप किसको बैन की बात कर रहे हैं. Blockchain is going to take off on a big national highway. All the ecosystem is in place. सर, अगर प्राइवेट गाड़ियां सब बंद हो जाएंगी तो केवल सरकारी गाड़ी चलेगी. किसने कहा? बिल कह रही थी सर. यही समस्या आप लोग की है. बिल को पढ़ लेते तो सवाल मुझसे नहीं पूछते. सर, आप लॉ मिनिस्टर रहे. ना, अब आपने सवाल किया तो जवाब सुनिए. बिल्कुल. आप उस समय के आईटी मंत्री और उस समय के कानून मंत्री से बात कर रहे हैं, तो थोड़ा विनम्रता से. और हमने आपसे इंटरव्यू भी किए हैं कई बार. सर, मेरा सिर्फ कहना क्या है, उसमें क्या था, क्रिप्टो पर बैन था. गेटिंग माय पॉइंट? We are examining that in my different capacity. सर, क्रिप्टो में बुरा क्या था? Just a minute. In the Standing Committee of Finance, एक मिनट मुझे जवाब दीजिए. तो ब्लॉकचेन पर कोई बंदिश नहीं थी. ब्लॉकचेन had complete encouragement of the government of India, and already after widest consultation, blockchain today is being encouraged everywhere and will be encouraged and should be encouraged. Therefore, since it is in a state of infancy, other state government will follow. Take the case of digital locker. नई चीज आई ना. बिल्कुल. आज देखिए करोड़ों डॉक्यूमेंट डिजिटल लॉक पर है. बिल्कुल. आप भी अपने मोबाइल फोन से अपना, बहुत विद्यार्थी अपना केवाईसी उससे कर रहे हैं. सब करते हैं. तो थोड़ा सा एडॉप्शन के लिए वक्त देना चाहिए, मैं पहली बात कहूंगा. इसलिए आई वुड लाइक ऑल द जेंट्री प्रेजेंट हियर टू बी वेरी क्लियर अबाउट द मिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन इकोसिस्टम, ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर is going to get fullest encouragement of the government of India, both for use by the government sector and also the private sector. Chaliye, that's a good statement. Be very clear about it. To be taken on record here. Now I come to the crypto part of it. Blockchain is the technology. Crypto is a part of this technology, using it. Now the whole world is grappling with crypto per se. Yes, crypto being a disruptive technology, tools, disrupts also. But let me flag some general issues, and I hope in the coming session this should be debated. Currency always has a sovereign imprint. I repeat, currency always has a sovereign imprint.
India's rupee, Reserve Bank of India signature, Mahatma Gandhi photo, pound in England, Queen Elizabeth photographs, dollar in America, you know what dollar carries. Washington's photograph is there to the best of my knowledge, an authorized signature. That makes it tradable, that makes it reliable, and that makes it trustworthy. Therefore, approval of the sovereign government within whose domain the currency operates is the sine qua non of global trade and economic discourse. Now you are coming with crypto. Crypto is what? Is a digital currency. कहाँ से आया, किसने लाया और कहाँ गई, इसका भी इकोसिस्टम नहीं बना है. मैं सवाल पूछ सकता हूँ? आप बोलिए. कहाँ से आया, किसने किया, वो दूर की बात है. सरकार उस पर टैक्स लगा रही है. मतलब सरकार ने नियम नहीं बनाए, कानून नहीं बनाया, पर इनकम टैक्स करे. और अगर मैं थोड़ा सा इसको गलत ना समझा जाए, मतलब स्मगलिंग बुरी है अगर ऐसा माना जाए, बट स्मगलर के इनकम को टैक्स कर लेंगे, बट स्मगलिंग के अगेंस्ट हमने लॉ नहीं बनाया. आपने बहुत सही कहा. और आप लॉ मिनिस्टर थे रविशंकर जी. ऑडियंस और हमारे सारे दर्शक ये जान ले कि शायद पहली बिल आपके पास ही आई थी, तब आप गद्दी नहीं, पहले मैं आपसे एक बात कहता हूँ, इस बात को समझिए आप. You must read the fine print of the FM's speech in the parliament. Digital currency we are going to encourage. Reserve Bank of India has already announced that the whole ecosystem of a digital currency. But till we take a final view on the crypto part, जो उसकी इनकम है उस पर हम टैक्स लेंगे. इस बात को समझिए. ये नहीं कहा कि हम क्राइम के कारण कर रहे हैं, बाकी कर रहे हैं. You must understand it. And I don't see anything wrong in it. Why? Because अभी तो मुझे बता रहे थे कि मेरे पास भी है $1 trillion, $1 billion, है ना? बड़ी बड़ी तस्वीर दिखाई जा रही है. तो बुरा क्या है सर? पैसा आ रहा है, लोगों को नौकरी मिल रही है, इनोवेशन हो रही है. अब उसी में समस्या हो कि आपने बीच में रोक दिया. तो मैं तो वही को बता रहा था आपसे. जो मैंने बात शुरू की थी, क्या कही थी कि द गवर्नमेंट सिंबल ऑफ अथॉरिटी is a precondition for a currency. By its very nature of the crypto, it is not today technologically possible to align with the government authority. That is one of the biggest things. The second thing is important is there is inherent anonymity in crypto. Inherent anonymity in crypto. उसी संदर्भ ने कहा था कहां से पैसा आया, किसने भेजा. Then anonymity in crypto, implications for terrorist funding, for money laundering, etc., etc. What is the architecture for that to contain it? And second, can we ignore the threat of cyber security? Can we ignore the cyber challenges which we face today? Rather than a lighter vein, with the regulations on social media, we have interacted. How much we have to work hard to safeguard the dignity of women. आइए अमेरिका में कंप्लेन करिए, आपको याद होगा. तो हमको उसके लिए रेगुलेशन बनाना पड़ा, अब चीज़ें निकली हैं. तो मेरा खाली कहना यह है कि हमने ये कभी नहीं कहा कि इसके खिलाफ है. We only want to tread with caution. अब आपने चिड़िया का घोंसला का घोंसला बताया, हम उसको कहेंगे सावधानी हटी दुर्घटना हुई. यह है क्रिप्टो. तो उसके लिए स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होने दीजिए, बातचीत होने दीजिए. अगर अच्छी चीज निकलेगी तो विल बी हैप्पी. रविशंकर जी, नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन ब्लॉकचेन आपके ही मंत्रालय ने निकाला था, आप वहाँ थे. And some of the applications that you have cited, that paper cited, was blockchain-based service network in China, identification system for smart city infrastructure, European blockchain partnership for privacy and cyber security, keyless signature infrastructure in Estonia, United Emirates Smart Dubai initiative, in the US Food and Drug Inspection to address the lack of transparency, Brazil Ethereum platform for various applications including voting, please take note of that, Chile is using Ethereum for energy grid transparency, कनाडा, और ये सरकारी दस्तावेज है भारत सरकार का जिसमें करीब 15-16 ये ऑप्शंस हैं. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Let's leave aside the regulatory aspect. We can perhaps also agree with the fact that the government of India has its own logic when it comes to law formulation, and it may take its time. However, on the ground, not just because of your previous experience in government, but as a people connected with the masses, where do you personally see blockchain being applied in a country where transparency and maximum governance is extremely important, sir? आप यही देखिए ना, मैं बता रहा हूँ, सीबीएसई सर्टिफिकेट में, एकेडमिक में आजकल सैकड़ों सर्टिफिकेट इस पर ब्लॉकचेन पर हैं। मैं जो इंडिया की बात अभी कुछ बता रहा हूँ, जहाँ कुछ चीज़ें शुरू हुई हैं। आपके ड्रग लॉजिस्टिक चेन फार्मास्यूटिकल, सर माइक रख लीजिए। ड्रग लॉजिस्टिक चेन फार्मास्यूटिकल में गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो लगभग 300 करोड़ के मेडिसिन को प्रोक्योर करती हैं इन नियरली 3000 हॉस्पिटल्स। Public distribution system, it is picking up very fast. Blockchain enabled GST information activities in Goa, it is picking up. Property registration in Karnataka is picking up. Therefore, there is a good start, if I can tell you that. And IIT Kanpur is having a blockchain-based degrees also. देखिए, हिंदुस्तान की एक तस्वीर जान लीजिए आप आधार लाए थे, आधार में देखता था, हमने आधार का एक अच्छा कानून बनाया with proper safeguards. Today, Aadhaar is one of the biggest digital movement in the world. 132-33 करोड़ के देश में 130 करोड़ लोगों के पास आधार है जी, लोग प्राउडली उसको होल्ड करते हैं। Therefore, अगर आप सावधानी से काम करते हैं और पूरे चीज़ों को कंसिडर करके करते हैं तो कठिनाई नहीं होती है। तो ब्लॉकचेन के बारे में मैं आपको कहता हूं कि द मोमेंटम हैज स्टार्टेड इन इंडिया, and I'm quite sure this momentum is only going to pick up and pick up very fast. Now the second question which is important is, why, and by the way, I would very gently urge all the gentry present here, don't confuse blockchain with crypto. Crypto is separate. It is a part of application of blockchain technology like many others. Therefore, let the technological sanctity of blockchain be maintained. Crypto has issues, crypto has plus points, crypto has many minus points too. So that is a question of debate, discussion and a stakeholder consultation. As a member of parliament and a member of the Standing Committee of Finance, how do you think our government and parliament will approach the law-making aspect of blockchain? पहले आप एक बात जान लीजिए, अगर मैं स्टैंडिंग कमेटी की चर्चा को आपके सामने रखूंगा तो आप मेरे खिलाफ प्रिविलेज कराएंगे क्या? नहीं सर, उसको भी ब्लॉकचेन पे डाल देते हैं। पहले आप जरा मुझे बता दीजिए आप कि अगर मैं स्टैंडिंग कमेटी के डिस्कशंस को यहाँ के सामने बताऊंगा और आप टीवी में दिखाएंगे, आपके व्यक्तिगत विचार पूछे मैंने। तो देखिए, इसमें मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ, मैं मेंबर स्टैंडिंग कमेटी हूँ, मैं टेक्नोलॉजी को समझता हूँ और टेक्नोलॉजिकल गवर्नेंस को समझता हूँ। If you ask my personal or public view, my view is very clear. This ground needs to be covered with a lot of caution. Crypto part, virtual currency. This ground needs to be walked through with a lot of stakeholder consultation. And this particular initiative a decision must be taken with the final view is mine. Is it good for the country or bad for the country? Yes, अब कहने वाले लोग कहते हैं इससे बहुत लोगों को नौकरी मिलेगी, बहुत पैसा आएगा। तो पैसा तो आपके बहुत चीज़ों से आता है। आजकल आप देखते हैं ना, मोबाइल पर बहुत चीज़ दिखाई जाती हैं और ये भी कहते हैं इसकी आदत नहीं डालें। याद है आपको? जी। फिर कहता हूँ इसकी आदत नहीं डालें। बट जिनको आदत पड़ गई है क्रिप्टो में निवेश करने की, एक मिनट सुनिए, आदतें बनती भी हैं, आदतें छूटती भी हैं। आदतों के बाद आप छोड़ दीजिए आप। अब मुझे याद है कि जिस समय मैंने राहुल जी ये सब चाइनीज ऐप्स को बैन किया था, मैं किसी का नाम क्या लूं, तो कहा आपने क्या कर दिया, हमारा दिन का 3-4 घंटा तो उसी पे जाता था। थोड़ा दिन आराम करिए, गाना सुनिए, भजन सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है, देश के हित में जरूरी है। इसलिए आदत तो आदत है, छोड़िए उस बात। आप सरकार में नहीं है, बट आप क्रिप्टो करेंसी पे बैन लगाने के फेवर में है कि अगेंस्ट? नो, इट कैन नॉट बी पुट इन ए स्ट्रेट जैकेट लाइक दिस। आई एम सॉरी सर, टैक्स लग रहा है। आई रिफ्यूज टू टेक दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू।
That is a wrong question to ask. The right question is, any decision on crypto must be taken after the widest consultation possible, hearing all the stakeholders, appreciating the comparative benefit. आप मुझे ये बताइए कि अमेरिका ने अभी इसको खाली प्रॉपर्टी कहा है, to the best of my knowledge. कनाडा ने इसको ट्रेड कहा है, किसी ने इसको लीगल टेंडर कहा है. अब आप छोटे कंट्रियों की बात मत बताइए, मैं बड़े बड़े देश की बात करने जा रहा हूं. तो दुनिया सब सावधानी से चल रही है और ठीक चल रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप बताइए यस और नो. ये ठीक नहीं है, बिकॉज क्रिप्टो ऑफर्स अपॉर्चुनिटी, क्रिप्टो creates challenges, and most important, crypto causes serious concern. Sir, bill Therefore, कब there तक आएगा? must be a proper convergence. Sir, when will the bill come? Any? अब ये तो सरकार तय करेगी. मेरे ख्याल में कंसल्टेशन चल रहा है, होने दीजिए. देखिए, मैं आपसे फिर कहूंगा और बहुत विनम्रता से कहूंगा कि let the mind application should be done in a proper manner, without pressure, without impulse. और ये मैं आपको फिर एक comparative, probably he was a part of that process, drafting the Aadhaar bill. A lot of pressures and counter pressure I was involved there. No, we'll go to the best bill, ultimately challenging the court. हाँ, आजकल तो माफ करिए, हिंदुस्तान में तो लोग बैठे ही हुए हैं. कोई बिल बनेगा तो झोला लेके कोर्ट पहुंचेंगे, ये उनका अधिकार है. तो हमको कि कोर्ट को बताएंगे कि कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ, तो उस समय हम क्या कहेंगे? आपसे कंसल्टेशन हुआ था, क्या कहेंगे? नहीं, हम पूरे पब्लिक मंच पे कंसल्टेशन हो रही है. बिफोर वी एंड, वी हैव जस्ट अ कपल ऑफ मिनट्स लेफ्ट. फ्रेंड्स, कुछ चीजें लाइटर वेन में भी कहता हूं, आपको उसे भी लीजिएगा, नो प्रॉब्लम. My colleague Saurav would have a small question. Can we get a mic to Saurav here, please? Oh, I thought you had a hand. Okay, we can take one question, just one question. Is there someone? Yeah, okay, go ahead. Please keep your question short. Just go ahead and ask. We'll try and get you a mic. Please introduce yourself and... Yeah, go ahead. Thank you very much. I just wanted to ask, is it not equivalent cryptocurrency, which is not really a currency, can they not be equated to shares of an unlisted company, which they are trading and selling in the form of a token? And on what legal basis would a government ban this? Okay, good. This is one of the questions of campaign for crypto. Okay, we are hearing it. Share, why it is an asset, why it is an infinite, invisible property. So there are a lot of things. The real thing is, what is the consequence of this? And to reply to your second query, can you regulate? By itself is the reply. If there is an inability to regulate, it doesn't mean it can be taken to ransom, globally speaking, to the rights of the people. Therefore, there has to be a proper convergence of the best minds of the world as to what shall be a good regulation. And yes, I take your question in this regard. There has to be convergence also globally with countries, so that many of the wrongdoings can be properly arrested and encouragement should be given. Well, we'll end it here because we are completely out of time, and I'm going to just say at the very end that I've seen as a reporter the process with which the convergence bill was debated. It didn't become law, but Ravi Shankar ji was there, other ministers of the first NDA government were there, and I'm convinced that despite the delays, if we were to call it that, whatever happens in terms of the law for the blockchain crypto world in India will definitely be an absolutely global standard formulation. And with that hope, I thank Ravi Shankar Prasad for... That's the right hope. With the right hope, for your time and your patience for taking all those questions. We'll quickly slip into a break or back to Abha and my colleague Ayush. Thank you, Ravi ji. Thanks a lot. If you like the video, do like, comment, share and subscribe.